today's topic is the focal spot. Focal spot. Focal spot, it is the area on the target to which the focusing cup directs the electrons and from which X-rays are produced. We have focusing cup on cathode. Okay. So it is area on the target. Target is at anode. Okay. So it is the area on the target to which the focusing cup it directs the electron and from where the X-rays are produced. This is the focal spot. Okay, focal spot on the tungsten target. So इलेक्ट्रॉन जो फोकसिंग कप हमारे इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट करता है एनोड पे, वहां पे एक छोटा सा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम फोकल स्पॉट कहते हैं, विच इज ऑन एनोड. नाउ वी नीड टू इफ वी नीड टू स्टडी एक्सरेज, नो, तो एक्सरेज की शार्पनेस होना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट ऑल द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स एंड द थिंग्स. So to increase the sharpness of the X-rays, we need to decrease the size of the focal spot. Okay, so to decrease the size of the focal spot, हमने एनोड को, इसको ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए बट क्योंकि हमें फोकल स्पॉट का साइज डिक्रीज करना है, हमने इसको स्लैंटिंग पे रख दिया. लेकिन अगर हम लोग स्लैंटिंग पे रख देंगे और अगर फोकल स्पॉट का साइज डिक्रीज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एज द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट डिक्रीजेस, जो हीट जनरेट हो रही है हमारी पर यूनिट टारगेट एरिया, वो इंक्रीज हो जाएगी. तो सपोज हम लोग इसको स्ट्रेट रखते हैं, ओके, और सिर्फ इसका फोकल स्पॉट का साइज डिक्रीज कर देते हैं, तो जो हीट जनरेट होएगी वो ज्यादा हो जाएगी. इसलिए टू डेसिपेट द हीट अप्रोप्रिएटली हमने एक सोल्यूशन निकाला कि हम एनोड को सीधा रखने की बजाय और टारगेट एरिया को छोटा करने की बजाय और फोकल स्पॉट को छोटा करने की बजाय क्यों ना हम इसको स्लैंटिंग पोजीशन पे रख दे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट टू फोकल स्पॉट. दैट इज, वन इज द नॉर्मल जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है, एंड द सेकेंड वन इज द एपरेंट फोकल स्पॉट, जो हम लोग एक पॉइंट से देखें तो हमें दिखे कि वो छोटा सा फोकल स्पॉट है. हम इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे बाद में. सो टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फोकल स्पॉट, फोकल स्पॉट का भी हमें छोटा होना चाहिए, उसका एडवांटेज लेने के लिए भी, एंड वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ द टारगेट, और ताकि इलेक्ट्रॉन्स भी लार्ज एरिया पे डिसिपेट हो और डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि हमारा जो हीट डेसिपेशन है वो अप्रोप्रिएटली हो, हमने क्या किया? द टारगेट इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द इलेक्ट्रॉन बीम. इसके इलेक्ट्रॉन बीम के हमने एक एंगल पे टारगेट एरिया को, जो टारगेट है, हमने उसको प्लेस कर दिया. ठीक है. द एपरेंट साइज ऑफ द फोकल स्पॉट सीन फ्रॉम अ पोजीशन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन बीम, effective focal spot is smaller than the actual focal spot size. Now ये अगर हम लोग देखें, ये हमारा है actual focal spot. Okay, this is the actual focal spot. लेकिन अगर हम लोग देखें कि एक apparent size is normal, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो वाला साइज अगर हम लोग देखें, कहाँ से? seen from position perpendicular to the electron beam. अब ये हमारे इलेक्ट्रॉन बीम्स यहां से आ रही हैं. अब इसके अगर हम लोग परपेंडिकुलर देखें, ओके, तो ये जो हमारा फोकल स्पॉट आएगा, इसका साइज हमारा कम हो जाएगा. दिस इज 1 mm इंटू 1 mm, दिस इज 1 mm इंटू 3 mm. तो ये डिफरेंस आता है. सो दिस इज द इफेक्टिव फोकल स्पॉट. नाउ द टारगेट इज इंक्लाइंड अबाउट 20 डिग्री to the central rays of the X-ray beam, and this causes effective focal spot approximately 1 mm into 1 mm as opposed to the actual focal spot which is 1 mm into 3 mm. So slant कर देंगे तो जो हमारा actual focal spot है इतना, उसकी बजाय हमारा जो size है effective focal spot का वो इतना हो जाएगा. effective focal spot हमें दिखेगा कहाँ से? seen from a line,
यहाँ से परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन बीम, या फिर यहाँ से, चलो ये तो स्लैंटिंग पे दिखेगा नहीं, बट यहाँ से अगर हम लोग इसका साइज देखें तो इट इज स्मॉल, दैट इज 1 mm into 1 mm. ओके, so this smaller effective focal spot results in a small apparent source of X-rays. कि ये स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, ये हमारा जो स्मॉल एपरेंट सोर्स ऑफ एक्स रेज है, एंड देन इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द इमेज बिकॉज ऑफ द स्मॉलर सोर्स with a large actual focal spot size to improve the heat dissipation, which is in stationary anode as it is not moving. We have a different case in rotating anode. We'll talk about it बाद में. So in a stationary, so this is the actual main thing. We have three main points. हैं हमारे पास. The first thing is अपना anode inclined at angle 20 degree. Second, size of effective focal spot from when we see from a ray perpendicular to the electron rays, the effective focal spot size. The size of the effective focal spot is less, which results in increased sharpness of X-rays. So this is the third point. Okay. So the other methods to dissipate heat from small focal spot other than the stationary anode is the rotating anode. I'll explain you that the rotating anode बाद में with the diagram. The tungsten target is in a form of a bevel disc. So first we will go through the main points of the rotating anode. The first is that the tungsten target जो हमारा है is in a form of a beveled disc. In the stationary anode, we have that stationary slanted copper stem के अंदर एक छोटा सा tungsten target, and here we have it in a form of a bevel disc which rotates. Now the electron strikes successive areas of the target, widening the focal spot by an amount corresponding to the circumference of the bevel disc. तो ये अगर हमारी डिस्क है, इसके सरकमफ्रेंस से बाहर जो भी है वो हमारा फोकल स्पॉट है. सो द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेवल डिस्क. बेवल डिस्क हमारा टंगस्टन टारगेट का, डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट ओवर द एक्सटेंडेड एरिया. एंड इन द स्टेशनरी एनोड व्हाट द मेथड वी हैव यूज्ड टू डेसिपेट द हीट इज टू स्लैंट द अपना कॉपर स्टेम एट एन 20 degree, so to get an effective focal spot and the actual focal spot, all that thing. Now in that rotating anode we have a stator which helps in rotating the rotator. Rotator is the thing which rotates the target, which is in a form of a bevel disc, and stator is the thing which helps the rotator to rotate. Okay, so the rotator which is attached to the anode helps in rotating the anode. The target and the rotor of the motor, it lies inside the X-ray tube. X-ray tube, that is the glass envelope. So the target and the rotor which rotates वो हमारा एक glass envelope में है, and the stator coil is lie outside the tube, and the stator coil which helps the rotator in rotations, it is outside the X-ray tube. So basically एक ये cup है, एक holding cup है, and this is if something like the X-ray tube. ये हमारा okay, if this is the target area and ये circumference से pencil के जो circumference है, if this is something, okay, this is blur, I hope you guys can see. If the circumference जो है अपना पेंसिल का, if this is the target area और ये हमारा attached है black portion suppose,
the rotor which helps it in rotating. So the stator is this thing. My hand is a stator which helps it in rotation. Okay, so the rotating anode are not used for the intraoral dental x-rays but are used in CEF and the other cone beam machines like CTs, which require high radiation outputs for a longer exposure. The main diagram of the rotating anode. So let's just read this. The X-ray tube with a rotating anode allows the heat at the focal spot to spread out over a large surface area, that is the dark band. Okay, current applied to the stator, this is a stator, so current applied to a stator induces rapid rotations of the rotator and the anode. So this is the rotator and this is the anode and this is the cathode. The path of the electron beam is shown in yellow. This is the path of the electron beam, and the useful X-ray beam is shown in the blue, and this is the X-ray beam here. So हमने जो पढ़ा, the tungsten target, this is the tungsten target. Okay, this is the anode which is attached to a rotor which is armature, which is again attached to a stator. As I told you, हम पावर सप्लाई देंगे स्टेटर को. स्टेटर will help in the rotation of the rotor, which again, as it is attached to the anode, it starts rotating the anode. And here at the cathode, this is the focusing cup, this is the filament which you know uh, helps in striking the electron over this black band is the target area on the anode. And from here we got the X-ray beam. The basic difference is that the in the stationary anode we have it stationary and एक छोटा सा portion था which is the target area. Here we have the target areas by the amount, actually the circumference of the bevel disc के according हमारा target area है. So the tungsten target is in a form of a beveled disc which rotates. Okay, electron strikes successive areas of the target, here widening the focal spot कितना हमारे एनोड की और द टंगस्टन टारगेट के circumference के according. We have a stator which helps in the rotation of the rotator, which is attached to the anode and helps in the rotation of the anode. Now the anode and the rotor and obviously the cathode is in the glass tube, that is the X-ray tube, and the stator, it lies outside the X-ray tube. So this the area ये जो outline or we can see here is actually the X-ray tube and the stator is located outside. So this is the basic main diagram we have of an X rotating actually anode. So this is the अपना stationary anode और stationary X-ray tube. यहाँ पे हमारे है filament or the focusing cup, and this is the stationary anode. This is the actual focal spot size, which is 1 mm into 3 mm, and here is the effective focal spot size, and we got the effective focal spot size जब हम इसको 20 डिग्री पे slant कर देंगे. And this is the central X-rays. So what if the slanting angle increases? So let's just see here. If we increases the slanting angle, you can appreciate इतना difference क्या आएगा. So let's just see यहाँ पे. So this is 1 mm into 3 mm and the effective focal spot size is the 1 mm into 1 mm. Okay, हम इसको perpendicular देख रहे हैं from an electron beam. So this is effective focal spot size. Can you just relate? यहाँ से we draw दो dotted lines from the effective focal spot size on both the sides. Okay, and end में what we got is the penumbra effect दोनों साइड पे.
दिस इज़ द डिटेक्टर, सपोज द एक्सरे फिल्म जो हमने वहाँ पे रखी है, एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, सपोज अ टूथ। ओके, तो ये जो हमारा पेनिम्ब्रा इफेक्ट है इट इज़ लेस एज कंपेयर्ड टू दिस वन, जहाँ पे हमने जो एंगल है, दिस इज़ द एंगल, ये एंगल हमने इन डिक्रीज कर दिया है। ओके, ये एंगल हमने डिक्रीज कर दिया है एंड द एंगल हियर इज मोर एज कंपेयर टू दिस। व्हाट आई मीन इज स्लांटिंग हमें ज़्यादा नहीं रखनी है। स्लांटिंग इट शुड बी, द एंगल शुड बी 20 डिग्री ओनली। अगर हम इसको एंगल को और कम कर देंगे एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो हम लोग एंगल देख रहे थे, here the angle is between, so this is the difference, no, यहाँ पे हम लोग एंगल देख रहे थे between the central x-rays and the anode, एंड यहाँ पे जो हम लोग एंगल देख रहे हैं it is between the electron beam. Okay, it is between the electron beam and the anode के जो एंगुलेशन है। अगर हम लोग सेंट्रल एक्सरे से और ये वाला एंगल देखें, सो दिस एंगल इज इंक्रीज्ड। दिस इज व्हाट आई मेंट स्टार्टिंग में, कि दिस एंगल अगर हम लोग वैसे देखें उसके कंपैरिजन में, उस डायग्राम के कंपैरिजन में, द सेंट्रल एक्सरे ये है एंड दिस इज द एंगल, सो दिस एंगल इज डिक्रीज, सो दिस एंगल इट शुड बी 20 डिग्री। ओके, अगर हमारा 20 डिग्री से ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, see what we got is the more of the penumbra effect as compared to the one we got at 20 degree. Okay, and what is the penumbra effect? I hope you guys can relate यहाँ पे। so this is suppose the earth black dot जो thing आप देख रहे हैं, and this is the sun. so this is the focal spot, I mean the, yeah, focal spot, and this is the object, और यहाँ पे हमें उसका वो मिल रहा है, व्हाट, द एक्सरे फिल्म हमारे यहाँ पे रखी हुई है। सो दिस इज द पेनिम्ब्रा इफेक्ट, द शेडनिंग जो हमें दिख रही है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, सो दिस इज व्हाट, आई होप यू गाइज कैन रिलेट दिस थिंग, दिस इज द पेनिम्ब्रा इफेक्ट जो हमें शेडो दिख रही है। सो अगर हमारा फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमारा कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, वी गॉट द ब्लर इमेज, not the sharp image. The actual, which is the main thing for a focal spot or to decrease the focal spot size, is to get the sharp image. So this is the actual focal spot. Okay, this is the focal spot, 20 डिग्री पे हमने इसको स्लांट किया, एंड दिस इज द apparent focal spot जहाँ से हमारी एक्सरे बीम निकलेगी। So the image we got is point focal spot पे penumbra effect. This is the penumbra effect. Okay, so the penumbra effect is less, ठीक है, and here we got the blurred image. क्यों? क्योंकि large focal spot है और हमारा penumbra effect और ज़्यादा हो जाएगा। So this is the white thing, दोनों में is the penumbra effect. So I hope you guys understood the basic funda of the focal spot. If you guys have any question or anything regarding the focal spot, please comment, write down in the comment section below. I'll try to explain it more easily. Thank you for watching. Please subscribe and share.